Okay. So, hello everyone. Today we are going to learn regarding the life process. Okay. That is your part of curriculum of standard 10, the chapter number 5. Okay. According to the CBSE, there are the weightage is segregated according to the unit, right? For the GSEB, it is a bit different, but for you, that is in a form of unit section, right? So, basic the life process. The term life process suggests what? The term life के लिए हम पहले इंडिकेशन क्या लेंगे कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है राइट जो मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है जिनका ग्रोथ हो सकता है दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बेसिक दे आर अलाइव ओके second in this chapter the whole chapter is segregated into the two basic portions right according to the plant part and according to the human body portion right basic आप in this chapter चार system पढ़ते हो that is in form of digestion second that is respiration afterward one that is your circulation and the fourth that is excretory system. Okay, so first we are starting with the overview portion today. So in this chapter, सबसे पहले आप mention करते हो one that is your introduction. Introduction में आपको importance of life process and the basic definition of life process समझाया गया. Other than that, they are explained regarding to how the four systems are interconnecting to the each other that are explained in the first introductory paragraph as well as the one basic definition of life process. After that introduction, they are elaborate regarding to the topic term as in nutrition, right? In this nutrition portion, you are going to learn regarding to the types of nutrition, right? There are two basic types of nutrition. One that is autotrophic and one that is heterotrophic mode of nutrition, right? There are further categorized into the classification, but that we are going to learn in the further portion. Okay. After that nutrition, you are going to learn regarding to the human digestive system. Okay. Along with that, before that human digestive system, they are elaborate regarding to the unicellular organism as in a form of amoeba, जिसमें आप एग्जैक्टली पढ़ने जा रहे हो डाइजेशन. ओके. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते तो बेसिक इट इज सेग्रीगेट इनटू द स्ट्रक्चर एज वेल एज इन फंक्शन पार्ट, राइट? So we're going to learn the basic structure of alimentary canal as well as regarding to that particular function of each and every carbohydrate, protein, and the fat element, right? Within diagrammatic image, we are concluding our topic in that portion. After that nutrition, the second basic, the main title is in context to the respiration. In the respiration, you are going to learn regarding to the first human respiratory system. Again, in this particular system, पहले आप पढ़ते हो basic structure of human respiration and afterwards how the each and every part is in a functioning form. Other than that, you are learn regarding to the importance of the hemoglobin, right? The basic, what are the basic function of that hemoglobin in your circulatory system as well as O2 CO2 exchange at the alveolar membrane level, right? After that human respiration, you are going to learn regarding to the various types of glucose breakdown pathway, right? That are one of the important portions जहाँ से various types of MCQ भी form होते हैं, as well as similarly आपको वही type का question भी direct पूछा जा सकता है कि we have the glucose is breakdown in the various types of organism and the different types of cells, right? After that glucose breakdown pathway, you are going to learn regarding to the respiration in plant. जहां पे आप स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा ऑलरेडी ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ में पढ़ी चुके हो, वही वापस से थोड़ा इलोबरेट करके दे आर एक्सप्लेन रिगार्डिंग टू द डायरेक्ट O2 CO2 exchange at the lenticles and with the root surface. Okay, then there end up that respiratory pathway. Okay, in the plant part. Moving towards next, that is your circulation. Okay, regarding to the circulatory system, you are going to learn the first thing that is human heart. Afterward human heart, आप पढ़ते हो double circulation.
Along with double circulation, tube vessel system. In the tube vessel system, the lots of students are confused, right? They are even mentioned the xylem fluid system, but it is not likewise. Tube vessel system में basic आपको elaborate करना है artery, vein and the capillary करनी है, okay? That is come under the category, and even the tube vessel system, that is your basic title of NCERT. So they are directly asked the title, okay? तो यहाँ पे आपको confuse होना नहीं है. After tube vessel system, you learn regarding to the platelet as well as lymph, right? Then additionally, do you know more to know का एक box दिया गया है regarding to the blood pressure, right? उसमें आपको इंस्ट्रूमेंट इलोबरेट किया है, हाइपर हाइपो ब्लड प्रेशर किस वे से समझाया गया, एंड अदर देन दैट नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, किस वे से फंक्शनिंग, राइट? वो भी हम डिटेल में एट दैट टाइम पूरा देख. अदर देन दैट आप लास्ट में पढ़ रहे हो रिगार्डिंग द प्लांट पार्ट, दैट इज transportation of water with the help of xylem tissue, and one transportation of food with the help of phloem tissue. Understood? पता चल रहा है यहाँ तक? हाँ या ना? Okay. Next, moving towards further, that is regarding to the fourth topic, that is excretion. In that, the one you should learn regarding to the human excretory system. जिसमें बेसिक आप पहले तो पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ते हो कि भाई किडनी क्या है, देन आफ्टर योर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा. अदर देन दैट आप पढ़ते हो दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इन डिटेल. ओके, दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो मैक्सिममली आपको पूछा भी जाता है इन द लास्ट ईयर. इट इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन टू, but in the GSEB, I guess, right? So nephron आप पढ़ते हो with the help of exact diagrammatic image, as well as आप inner word पढ़ते हो contain in a form of urine formation, right? In the urine formation, what are the basic role of nephron? वो आप detail में in this topic समझ लो. Understood? After that basic nephron, आप artificial किडनी पढ़ते हो पूरा डिटेल में, हीमोडायलाइजर यूनिट किसको बोला गया है, दैट इज आल्सो फॉर डू यू नो मोर टू नो बॉक्स एक गिवन है, राइट? एंड द एंड ऑफ द चैप्टर यू आर गोइंग टू लर्न दैट रिगार्डिंग टू द प्लांट एक्सक्रीशन किस वे से होता है, दैट लास्ट पैरा छोटा सा, एंड आफ्टरवर्ड विद द हेल्प ऑफ समरी जस्ट कंक्लूडिंग द होल पोर्शन. यहां तक समझ आ रहा है? हाँ या नो? राइट. व्हाई वी आर मेंशनिंग द होल ओवरव्यू पार्ट हियर, कि ओवरव्यू से आपके दिमाग में क्लिक होता है कि पूरे चैप्टर में आप क्या बेसिक फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हो और किस वे से फॉर्मेट है, राइट? दैट्स व्हाई ऑलवेज यू शुड टू मेंशन ओवरव्यू फर्स्ट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू लर्न रिगार्डिंग टू द एनी चैप्टर एट द फर्स्ट, राइट? ओवरव्यू दिमाग में रखने से एक बेनिफिट होता है कि छोटे से छोटा टाइप का क्वेश्चन भी आपके दिमाग में क्लिक होता है व्हेनेवर यू आर गोइंग टू लर्न एट दैट पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, तो ऑलवेज आपकी एक हैबिट बनाओ कि ओवरव्यू आप हमेशा पहले लो, आफ्टरवर्ड यू आर गोइंग टू द इनर वर्ड ऑफ कंटेंट ऑफ चैप्टर. अंडरस्टूड? तो बेसिक ओवरव्यू पता चल रहा है कि आप क्या क्या पढ़ने जा. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन इन डिटेल. इट्स ओके, ले लो अच्छे से, उठा लो, राइट? तो स्टार्ट विद फर्स्ट इंट्रोडक्शन. कि बिफोर हम सिर्फ डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस देख रहे हैं कि भाई व्हाट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस सजेस्ट टू यू. ओके, द मेन प्रोसेस दैट आर कैरी आउट बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या मेंशन किया? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म in order to sustain their existence as living being is called the life process, right? मतलब सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कोई भी टाइप की ऑर्गेनिज्म इन अ फॉर्म ऑफ यूनिसेल्युलर, in a form of multicellular organism, right? यूनि में एग्जांपल ले सकते हो अमीबा, मल्टी में एग्जांपल ले सकते हो ह्यूमन बॉडी, राइट? टू सस्टेन देयर ओन आइडेंटिटी, व्हाट आर द बेसिक प्रोसेसेस, राइट, जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको आप पढ़ने जा रहे हो ये पूरे चैप्टर में, राइट? इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर आप 4 बेसिक प्रोसेस पढ़ते हो, राइट? सबसे पहले आप पढ़ रहे हो न्यूट्रिशन, जिसमें आप पढ़ते हो ह्यूमन डाइजेशन. आफ्टरवर्ड सेकंड आप बेसिक portion पढ़ो, that is respiration. Other than that, third, that is circulation,
and fourth, that is excretion. Okay, but why this fourth system is there in this chapter? उसके अलावा भी तो ह्यूमन सर्वाइवल की बहुत सारी सिस्टम है, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, एज वेल एज योर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया, राइट, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, बट यही चार सिस्टम ये चैप्टर में क्यों दी गई है, राइट? उसका बेसिक इंटरलिंकिंग कोरिलेशन आपका इंट्रोडक्टरी पैरा समझाता है बहुत अच्छी तरीके से. As you are a CBSE student, so basic, the one of the question is asked to you in the 2-marker or 3-marker question. Give a reason or justify the statement. The life process consists nutrition, respiration, circulation, and excretion. Right? According to your perspective or the point of view. If they are asking it this type of question, that is come under the category of open-ended question. Okay, जहां पे आपका interpretation regarding to the chapter आपको short में समझाना, right? अभी ऐसे वैरायटी के क्वेश्चन को आप समझाओ उससे बिफोर आपके दिमाग में पहले सिस्टम का एंड रोल पता होना चाहिए हर एक सिस्टम. ओके, सबसे पहले कितने सिस्टम है, तो सबसे पहले आप मेंशन करो, हम सब कुछ जान रहे हैं अभी ह्यूमन बॉडी के बारे में. ठीक है, पहली सिस्टम ले लेते हैं डाइजेशन. ठीक है, व्हाट आर द बेसिक रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? कन्वर्जन ऑफ complex food substance into simple absorbable form that body can store and utilize, right? That is a basic definition. मतलब conversion of complex food substance कैसे? मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट के एलिमेंट में जितने भी आपके एलिमेंट है उसको ब्रेक डाउन करके ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जो आपका बॉडी स्टोर कर पाए एंड यूटिलाइज कर पाए. अंडरस्टूड? दैट इज बेसिक फंक्शन ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम ने सिंपल फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया. मान लो एग्जांपल ले लेते हैं आपका बेसिक ग्लूकोज C6H12O6 आप लिख लो, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ व्हाट? कार्बोहाइड्रेट, राइट? ये ब्रेक डाउन प्रोसेस से हमने ले लिया क्या? आपका बेसिक एलिमेंट ग्लूकोज, बट खाली यहां तक काम होगा नहीं. मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर फंक्शन देखो तो बेसिक फंक्शन क्या लिखोगे? O2 CO2 एक्सचेंज, राइट? दैट इज एन बेसिक फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी. नेवर एवर यूज द टर्म प्योरिफिकेशन, राइट? इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलवेज यू शुड टू यूज द टर्म एक्सचेंज. इफ प्योरिफिकेशन लिखा मतलब उधर ही आंसर हो गया गलत, राइट? प्योरिफिकेशन का काम किसका है? किडनी का, राइट? It will purify the nitrogenous toxic waste product. Okay, so purification for the excretion. Exchange term always use करना है respiratory system के लिए. So basic function of your respiratory system is what? O2 CO2 exchange, right? O2 CO2 exchange से आप CO2 को कहाँ पे भेज रहे हो? Outside the body. और O2 को हमको लाना है inside. Okay, but why we required oxygen, right? क्यों चाहिए भाई ऑक्सीजन? Why? Can anybody tell? Okay, हम ही बोल देते हैं. सिंप्लीफाई वे से अगर आप नोट करो, ग्लूकोज आपने एलिमेंट ले लिया भाई, ग्लूकोज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से गैदर किया, ऑक्सीजन आपने गैदर किया रेस्पिरेटरी सिस्टम. दोनों जाएंगे आपके बेसिक सेल में थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम. देखो सर्कुलेटरी सिस्टम का एंड रोल क्या होता है, राइट? Circulatory system का एंड रोल है ट्रांसमिशन ऑफ न्यूट्रिशनेटेड एज वेल एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. तो आपके बेसिक फंक्शनल यूनिट आप गिनो तो कौन है? सेल. सेल तक आपके ऑक्सीजन एज वेल एज आपके ग्लूकोज C6H12O6 को भेजा किसने? आपके ब्लड के थ्रू. वो ट्रैवल करके गया कहां तक? तो बेसिक सेल तक. ओके, तो तीसरे सिस्टम पिक्चर में आए कौन? सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, आपको यूटिलाइजेशन करना है ऑक्सीजन का और ग्लूकोज का, जिसके लिए व्हाट वी नीड? ग्लूकोज ब्रेकडाउन पाथवे. बट हमारे सेल में कौन सा एलिमेंट है? तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया. आप सबने स्टैंडर्ड 9th में सेल चैप्टर में पढ़ा है, राइट? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल पढ़ा है ना, एटीपी फॉर्मेशन. बट एटीपी बनेगा कैसे भी? जब सेल के पास पहुंचेगा ग्लूकोज, जब सेल के पास पहुंचेगा ऑक्सीजन, राइट? तो ब्रेक डाउन होता कैसे उसको भी जानिए. सबसे पहले आपके सेल के इनर वर्ड C6H12O6 हम लेके गए ग्लूकोज को. अंडरस्टूड, राइट? ब्रेक डाउन प्रोसेस होगा कहां पे? साइटोप्लाज्म. दैट यू नो व्हाट इज साइटोप्लाज्म?
पता है ना साइटोप्लाज्म क्या है? सेल, सेल में सेंट्रोवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा जितनी भी ऑर्गेनली है, जो ग्राउंड एलिमेंट है, दैट इज समझते साइटोप्लाज्म। वो ग्लूकोज पहले टूटा कहाँ? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में बना 3 कार्बन एलिमेंट पायरूवेट, राइट। ये 6 कार्बन था, 3 कार्बन एलिमेंट बना, राइट। आफ्टरवर्ड इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज आपका ब्लड क्या लेके गया था हर एक सेल तक? ऑक्सीजन, राइट। कहाँ पे गया? माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज पावर हाउस ऑफ सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल, एंड एट द एंड बाय प्रोडक्ट में आपको क्या मिला? CO2 प्लस H2O प्लस ATP, दैट इज योर एनर्जी करेंसी, राइट। पता चल रहा है? तो फॉर ब्रेक डाउन प्रोसेस आपकी बेसिक नीड कौन थी? तो भाई ग्लूकोज, साथ साथ में ऑक्सीजन। बट ये सब कुछ को कहाँ भेजना है? माइटोकॉन्ड्रिया तक, मतलब आपके हर एक सेल तक। वहां तक जाने के लिए हेल्प किसने की? तो भाई आपके ब्लड एलिमेंट ने। किसके थ्रू? थर्ड सिस्टम, दैट इज केम इन द पिक्चर, सर्कुलेटरी सिस्टम। अंडरस्टूड? नाउ सारी प्रोसेस होते होते वेस्ट एलिमेंट भी बनेंगे, राइट। वेस्ट एलिमेंट हमारी बॉडी के लिए कैसे है? हार्मफुल, हार्मफुल, बट ऑब्वियसली दे आर टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। अगर इनर वर्ल्ड रह गए तो व्हाट वी नीड to excrete out them. That's why the fourth system came in the picture in a form of excretory system, right? So excretion करेगा क्या? Through the particular excretion of the urine, nitrogenous toxic waste product आपकी बॉडी के बाहर हो जाएंगे through mouth. So we can suggest that that's why the fourth system is given in this chapter. Well justified answer है। 4 सिस्टम ही क्यों है? अगर आपको ऐसा पूछा जाए, सर्वाइवल के लिए 10 सिस्टम चाहिए हमको, राइट, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में कैलकुलेट की थी बहुत अच्छे से। बट अभी के लिए लाइफ प्रोसेस में 4 ही क्यों? अगर ऐसा क्वेश्चन आए, एंड आपको आ भी सकता है, राइट। जस्टिफिकेशन, बिकॉज इंट्रोडक्शन से एक आध एक क्वेश्चन ट्रिकी बनता है, जिसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। जब आपको पूछा जाए व्हाई इट इज देयर, तो यू कैन मेंशन इन अ दैट। अंडरस्टूड? हाँ या ना? शॉर्ट रिकैप एक बार कर दे वापस से, फिर आगे बढ़ते। तो बेसिक why this four system is there? The function of digestive system is conversion of complex food substance into simple absorbable form that body can store and utilize, right? तो conversion करके आपने complex से बना दिया simple glucose. Afterward, function of your respiratory system is to get O to CO2 exchange, right, with the help of the partial pressure amount. Okay, तो O to CO2 exchange से आपने amount of oxygen body में gather की. Now with the help of circulatory system, the end role of circulatory system is what? To provide oxygenated and nutritionated blood to each and every cell of human body for growth and repair. Okay, तो हर जगह पे हर एक सेल तक कौन पहुंच गया? आपका बेसिक ग्लूकोज, साथ साथ में ऑक्सीजन, राइट। with the help of oxygen and the glucose breakdown process होगा। through breakdown process conversion होके आपका end purpose to gather the amount of energy वो फुलफिल होता है, राइट। आफ्टर दैट जो वेस्ट एलिमेंट बचा इन अ फॉर्म ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं, तो व्हाट वी नीड? वॉश आउट फ्रॉम आवर बॉडी। दैट्स व्हाई द एक्सक्रीटरी सिस्टम केम इन द पिक्चर। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई द फोर सिस्टम इज देयर इन योर बेसिक एनसीईआरटी एंड दिस चैप्टर। क्लियर? यहां तक समझ आ रहा है? पक्का? ओके, मूविंग टुवर्ड्स फर्दर। तो इंट्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट डन। बेसिक आपके इंट्रोडक्शन के बाद आपकी एनसीईआरटी 4 डिफरेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चन लिखती है। अभी सर्टेन टाइम इन टेक्स्ट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देते हुए 2 मार्क में सीधे सीधे पूछ ली, राइट। तो आपके पास वैलिड जस्टिफिकेशन होना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बॉडी? ओके, मतलब वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं, पहले क्वेश्चन इंटरप्रेट करो। तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं कि खाली बेसिक डिफ्यूजन के थ्रू ही आप ऐसा बोलो कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में हर जगह है विदाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इट इज बिट डिफिकल्ट, राइट। क्यों? बिकॉज हमारा बॉडी का हर एक सेल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, राइट। ऐसा बोला जा रहा है स्टडी के अकॉर्डिंगली कि बेसिक खाली डिफ्यूजन के थ्रू अगर एलिमेंट जाए तो हमारे लंग्स से लेके पैर के टो तक खाली डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को जाने में 3 साल लग जाएंगे, राइट। दैट इज एन बेसिक स्टडी। So it is not at all possible. Okay, so you can mention कि only diffusion process कहाँ चलेगा? जब खाली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो एग्जांपल अमीबा ले लो,
अमीबा के पास आउटर मेम्ब्रेन कौन है? तो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ऑल द टाइम, राइट? तो दे कैन परफॉर्म द O2 CO2 एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस ओनली। हमारे अल्वियोली मेम्ब्रेन पे भी O2 CO2 एक्सचेंज ही चल रहा है थ्रू डिफ्यूजन, बट अकॉर्डिंग टू खाली और basic your diffusion process we cannot fulfill our body oxygen demand because हमारा body system कैसा है? Systemic level of organization है, यहाँ पे कैसा था? Cellular. So if the body complexity is less, right, in a form of tissue level or the cellular level, so we can fulfill the demand with the help of only diffusion process. But if the complexity of the body is very high, so we cannot match our demand. Understood? समझ आ रहा है यहाँ तक? ओके, तो फर्स्ट का आंसर आप सफिशिएंटली समझा पाओगे कि व्हाट इज द एक्चुअल बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी. ओके, सेकंड क्वेश्चन बोला गया आपको, do not, okay, the criteria to be used to decide whether something is alive. Okay, तो बेसिक क्राइटेरिया कुछ कोई चीज अलाइव वो तो हमने पहले ही बोल दिया कि भाई मूवमेंट है बॉडी की, राइट, या तो ग्रोथ है या तो पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन है, राइट. ऑल द थिंग इज रिलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज लिविंग और नॉट, राइट. जितने भी आपके लाइफ प्रोसेसेस के बेसिक सिस्टम है उस सारी चीज से आप डिफाइन कर सकते हो द थिंग इज अलाइव और नॉट. ओके, सर्टेन कंट्रोवर्शियल फॉर्म इज आल्सो देयर लाइक एन वायरस दैट इज अलाइव और नॉट, बट उसके क्राइटेरिया अलग अलग है. जैसे वायरस की जो साइज है, राइट, एग्जैक्ट अगर आप साइज देखो तो वो स्मॉलेस्ट सेल आपका माइक्रोप्लाज्म है उससे भी छोटी है, राइट. एंड द डेफिनेशन इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट सेल कैन नॉट कंसिडर एज एन लिविंग एलिमेंट, राइट. अदर देन दैट उनका रेप्लिकेशन होता है होस्ट में जाके, राइट. तो दो कंट्रोवर्सी की वजह से कहीं ना कहीं वायरस को एज एन लिविंग नॉन लिविंग के क्राइटेरिया के बीच में रखा गया. देन मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the outside the raw material to use for by an organism. Okay, तो रॉ मटेरियल में आप गिन सकते हो, जैसे खुद के लिए हमारा रॉ मटेरियल बेसिक हो गया ऑक्सीजन कहीं ना कहीं, राइट, डाइजेस्टिव एलिमेंट इन अ फॉर्म ऑफ माइक्रो एलिमेंट. प्लांट के लिए ले लो CO2 हो गया, राइट. अदर देन दैट द क्लोरोफिल, सनलाइट, एवरीथिंग इज एन रॉ मटेरियल फॉर देम बिकॉज दैट आर आल्सो द अलाइव. ओके, देन द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोसेस would you consider essential for maintaining the life? This four processes like nutrition, respiration, digestion and excretion etc. लिखना है पीछे. ओके, बिकॉज आपको पूछा गया है कि अलाइव रहने के लिए आप किसको कंसिडर करते हैं, राइट, एज एन असेंशियल. तो खाली ये चार असेंशियल नहीं है, राइट. कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से नर्वस सिस्टम भी असेंशियल है, एंडोक्राइन भी असेंशियल है. Reproduction is not too much essential, but it is part of the that organism. So we cannot only conclude with this four system, okay, is compulsory, but other than this four, rest of all are also the equivalently important. Okay, you can mention that all the system, otherwise आप चार लिख के etc लिख के छोड़ सकते हैं. Done with that in-text question. समझ आ रहा है? चारों के चार सफिशिएंटली समझा पाओगे. बेसिक ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू द CBSE बोर्ड अगर जाए हम स्पेसिफिकली, राइट, कि भाई कौन से एक्सेस वेराइटी बन सकते, तो सबसे कॉमनली पहले लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन के साथ आपको चार सिस्टम का जस्टिफिकेशन पूछ सकते हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा. उसके अलावा आपको पूछ सकते हैं कि वन दैट रिगार्डिंग टू द पर्टिकुलरली टू सिस्टम इंटरकोरिलेशन, हाउ द रेस्पिरेशन एंड द डाइजेशन इज इंटरकनेक्टेड, हाउ द एक्सक्रीशन एज वेल एज पर्टिकुलरली और अल्टरनेटिव सर्कुलेशन आर इंटरकोरिलेटेड. कोई भी 2 टाइप के सिस्टम का एज एन इंटरकोरिलेशन आपको पूछ सकते हैं. अंडरस्टूड? तो दैट इज बेसिक थिंग कि जो आपको मैक्सिमम इंट्रोडक्शन से पूछ सकते हैं इन अ वैरायटी ऑफ. पता चल रहा है यहाँ तक? हाँ या ना? पक्का? ओके, so moving towards further, so start with the first nutrition. Okay, तो न्यूट्रिशन के बारे में पहले आप बताओ. कैन एनीबडी नो द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन? जस्ट अभी बोलो. Yes, autotrophic and the hetero. The term auto stands for cell, okay, and the term hetero stands for dependent. क्या बात है, पहले से याद है. चलो, so nutrition, okay. तो बेसिक अगर न्यूट्रिशन को देखें तो सबसे पहले तो न्यूट्रिशन की बेसिक डेफिनेशन समझो, राइट. यहाँ पे ध्यान. बेसिक डेफिनेशन को अगर समझते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन इज एन असेंशियल थिंग, राइट,
for the organism to survive, as well as you can say as in कि digestive system का base element है, right? अगर macro micronutrient ही नहीं गए body में तो digestion किस बात का हो रहा है, right? तो basic necessity है to survive any type of organism. Okay, type of nutrition को जैसा आपने बोला वैसे categorize कर देते हैं. There are two main types. One that is termed as an autotrophic mode of nutrition. Second, that is heterotrophic mode of nutrition. The term here auto, that is suggests self. मतलब जो ऑर्गेनिज्म खुद से अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते, राइट? दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जिसका बेस्ट एग्जांपल कौन है भाई? तो आपका प्लांट पार्ट, प्रोड्यूसर जिसको बोल रहे हो प्लांट, एज वेल एज द ऑर्गेनिज्म व्हिच कंसिस्ट द क्लोरोफिल पिगमेंट इन देम. ओके, जिसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ sunlight, availability of water, all the organism can even perform the photosynthesis process, right? तो प्लांट बेसिक एग्जांपल रखते हैं. अदर देन दैट आपको पता हो तो ब्लू ग्रीन algae हो गया, राइट? दैट आर आल्सो द कम अंडर द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ organism because they even consist of chlorophyll pigment in them, right? So the organism which can produce their own food with the help of sunlight, chlorophyll pigment as well as water with the process of photosynthesis, they come under the category of autotrophic mode of nutrition. The term hetero that suggests what? They are depend on someone for nutrition. Okay, मतलब the organism they are depend on the someone for the nutritive purpose. मतलब कोई भी other organism के ऊपर rely करते. जैसे खुद का एग्जांपल लो, वी आर आल्सो द रिलाई ऑन द प्रोड्यूसर, राइट? जो नॉनवेज कंज्यूम कर रहे, दे आर आल्सो रिलाई ऑन द ऑर्गेनिज्म, राइट? एग, एवरीथिंग. मतलब वी कैन नॉट प्रोड्यूस आवर ओन फूड with likewise like plant because we do not have the chlorophyll pigment. होता तो मजा आ जाता नहीं, राइट? खाली ग्रीन दिखते, बाकी कोई झंझट ही नहीं होती जीवन में, बट इट इज नॉट इन दैट. ओके, तो बेसिक हमको कहीं ना कहीं रिलाई रहना पड़ता है. तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्दर सेग्रीगेट होते हैं डिफरेंट तीन वेज. ओके, एक हो जाता है ऐसा ऑर्गेनिज्म कि जो खाली डेड एंड डिकेड मटेरियल के ऊपर रिलाई, राइट? एज वेल एज they can perform that particular digestion intracellularly, right, inside the body. Yes, best example that is mushroom as well as mold. Okay, bread mold भी हो गया. उसके अलावा बात करते हैं one that in respect to saprophyte के बाद parasitic. The organism are depend on the other for the nutritive purpose directly और organism के ऊपर rely करते हैं. हाँ, Cuscuta, that is the best example. Other than that, teeth, lye, everything are come under that particular category. And the third category, term as in holozoic mode of nutrition. The term holozoic suggests yes, human being, very good. But the particular definition is the organism which can digest their particular food extracellular, right? In a hollow space. They are come under category of holozoic mode of nutrition. Understood? पीछे डिटेलिंग में देख रहे, बट पहले हम ऑटोट्रॉफिक को खत्म कर देते हैं. यस, पक्का यहां तक समझ आ रहा है? ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स फर्दर, जाने जागे. ओके, term starting with an autotrophic mode of nutrition. Make a definition, everyone. The organism can perform photosynthesis process in the presence of sunlight, CO2, and one that is chlorophyll pigment, right? So that all the organisms come under the category of autotrophic mode of
न्यूट्रिशन, राइट। एग्जाम्पल हमने मेंशन किया था, दैट इज प्लांट। सिंप्लीफाई वे से आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन व्हाट इज न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। एट द टाइम यू शुड टू elaborate it, प्रॉपर डेफिनेशन एंड द ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना है भैया आपको। क्लियर, यहाँ तक समझ आ रहा है, हाँ या ना? ओके, so the basic definition is what? The organism, they can perform the photosynthesis process with the help of raw materials like CO2 plus water, water बच गया, what? Sunlight as well as chlorophyll pigment. Exact location of chlorophyll pigment अगर आपको पूछना है तो they can ask you because it's the part of your cell chapter in the 9th standard. Can anybody know the exact location of chlorophyll pigment? Stomata, chloroplast हो गया, but exactly in the chloroplast where? Yes, Arya, बोलो. What is an exact location? If you know that in the part of your particular chloroplast, grana किससे बना? Thylakoid, right? Nearest answer, right? So basic exact location of particular your chloroplast, that is thylakoid, okay? भूल गए थाइलेकोइड तो क्या है, यहाँ पे देख लो एक बार। यस, सी दिस पर्टिकुलर आपका क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे जाना चाहिए, राइट। इनसाइड दिस लिक्विड एलिमेंट टर्म एज इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर होते हैं दैट पर्टिकुलर ग्रेना, ग्रेना बने किससे? वो थाइलेकोइड। थाइलेकोइड किसको बोल रहे हो? एक एक डिस्क को थाइलेकोइड बोले, राइट। इनसाइड द थाइलेकोइड इनर वर्ड आपका बेसिक क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाए, अगर ऑब्जेक्टिव में आपको क्लोरोप्लास्ट दिया है और बाकी ऑर्गेनल है तो क्लोरोप्लास्ट, इफ ग्रेना दिया है और कोई अदर पार्ट लिखा है तो ग्रेना, बट थाइलेकोइड लिखा हो तो एग्जैक्ट करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा थाइलेकोइड। ओके, तो ऑलवेज टिक थाइलेकोइड इफ इट इज देयर इन ऑब्जेक्टिव, अदरवाइज क्लोरोप्लास्ट ग्रेना इज आल्सो इक्विवेलेंटली करेक्ट। अंडरस्टूड? यस, यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? ओके, मूविंग टुवर्ड्स फर्दर। तो बेसिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पहले जान लेते हैं, राइट। आपकी एनसीईआरटी क्या क्या इलोबरेट करती है इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, पहले उसको समझिए। तो सिंप्लीफाई वे से आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। तो भाई फोटोसिंथेसिस इज इन प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, पिगमेंट, वाटर as well as particularly your CO2, and the plant can perform the basic nutritive element for their survival. That is termed as in photosynthesis process. अदर देन दैट इक्वेशन आपकी एनसीईआरटी इलोबरेट करती है, जो सेम इक्वेशन आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, राइट, वो आपको मेंशन करना। एंड उसके अलावा आप मेंशन करते हो 3 डिफरेंट इवेंट्स। ओके, एक चीज दिमाग में ऑलवेज ध्यान रख लो, इवेंट्स, डेफिनेशन एंड इक्वेशन, ये 3 चीज में आपके ओन वर्ड थोड़े बहुत ही चलते हैं, राइट। बेसिकली दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप एग्जैक्टली लिखोगे कि जो एनसीईआरटी में, राइट। एटलीस्ट चलो आपके वर्डिंग आगे पीछे हो, बट सीक्वेंस, सीक्वेंस तो आपको इवेंट में थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ता है, देन दे गेट गिव अ फुल एंड फुल मार्क। ओके, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको, राइट। इवेंट हो तो एटलीस्ट सीक्वेंस नहीं बदलना चाहिए, इक्वेशन आपका प्रॉपर वे से बैलेंस होना चाहिए, जो आप सीखते हो आराम से केमिस्ट्री में, राइट। तो इट इज नॉट अ बिग डील फॉर यू, बट ये छोटी छोटी चीज है जहाँ पे आपका हाफ ऑफ मार्क डिडक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे आप उतना लुक क्यों देना है कि हाफ मार्क भी हमारा कोई लेके जाए, राइट। तो स्पेसिफिकली आपको ये हर एक जगह पे प्रॉपर वैसे ध्यान रखना है, इधर ध्यान चाहिए, राइट। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस इन विच, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, द प्रोसेस इन विच द प्लांट prepare their food with the help of